Those drogue parachutes will slow it down from 350 to about 119 miles per hour. We can see 15 kilometers. Brace for drogue window. अभी जाएंगे ये जब लैंड करेगा। And ये लैंड किया। Splashdown, Crew 9 back on Earth. ये देखिए ये वाह सिर्फ 10 दिन का ये टूर था यार। साहब लगाओ, खला में 9 महीने बता के आए हैं। जो भी वहां पर ये काम करते हैं या जो भी ये देखते हैं, ये इन लोगों को सलूट है भाई हम लोगों की तरफ से। मैंने तो सिर्फ मूवीज में देखा है, ये रियल में देख के ना ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत ही एडवेंचरस और थ्रिलर मूवी देख रही हूँ। काफी मतलब कि इन्फॉर्मेशन मतलब के पास चली है कि किस तरह आता है सब कुछ, काफी मोटिवेटेड। And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शहजाद मिर्जा। वेलकम टू सीन ऑन। मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम। सबसे पहले उनका तारुफ टिकटॉक की मशहूर पुप्पो स्यापा शफक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिनकी मॉडलिंग ने लगाई हुई है आग मॉडल किरण सरवर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज किरण सरवर। वेलकम हो गया सीन ऑन है में। कश्मीरी मुंडा राजा साग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सीन ऑन। गाइस आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं। ये वीडियो जो है ये इंसानियत की कामयाबी का एक जीता जागता सबूत है। नासा के एस्ट्रोनॉट जून साल 2024 को जो है ना खला में निकले थे और वहां पे कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से जो है ना इनका वो मसला हो गया था वहां पे, और 9 महीने की तवील मुद्दत के बाद फाइनली वो जमीन के ऊपर सेफली लैंड हो गए। और वो किस तरीके से वो वापसी लैंड हो रहे हैं उसकी सारी डिटेल जो है ना वो नासा ने इशू की है, उसी के ऊपर जो है ना हम रिएक्शन करने लगे हैं। देखते हैं कि किस तरीके से जो है ना एस्ट्रोनॉट्स वापसी आ पाए हैं, उसकी डिटेल भी हमें वीडियो के अंदर ही पता चलेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक। और हम चाहते हैं कि सीन ऑन को यूट्यूब का नंबर 1 रिएक्शन चैनल बनाए। तभी मुमकिन है जब आप लोग हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे। आप हमारी टीम का हिस्सा हमें सब्सक्राइब करके बन सकते हैं। लेट्स वॉच दिस वीडियो। And that view is from the WB-57, which is one of NASA's high altitude planes that is tracking. Now, because of the way that this camera is configured, it does look like it is dark, but it is indeed daytime, and you're beginning to see that plasma trail as Dragon re-enters the Earth's atmosphere. All of that is expected. 3 minutes. 18 तारीख pretty को incredible लैंड हुआ है। views 18 तारीख of को। the Dragon spacecraft making its way home back to planet Earth Whoa. with the Crew 9 astronauts on board. Once again, this view is coming from the WB-57 plane. Freedom is with you. 4.16. Enjoying the ride. Copy that, Freedom. Great news there from Commander Nick Hague reporting back. We see a healthy flight computer. Expect automated chute deployment. Freedom copies. Like we said before, things moving very quickly as Dragon Freedom makes its way home. Next event coming up will be deployment of the Drogue parachutes. This occurs around 18,000 feet. 15,000 GPS feet. has converged. Expect nominal altitude for drogue chute deployment. Those drogue parachutes will slow it down from 350 to about 119 miles per hour. We can see 15 kilometers. Brace for drogue window. We can see seat rotation happening inside the capsule. Great to get those first views of our crew members. Once again, the capsules are going about 350 miles per hour when the drogues are deployed. Those drogue parachutes that we manufacture here in-house are going to slow the spacecraft down to 119 miles per hour. And that is when we will see the main parachutes deploy, and that occurs about 6,000 feet above the ocean's surface. And we are expecting drogue deployment at 2:53 p.m. Pacific, so we should see it any second now. And there you are getting a great view of Crew 9 inside Dragon Freedom as it returns back to Earth. We are awaiting the drogue deploys. This view coming from the WB-57 high altitude plane. And there you see it on your screen, drogue deployment. Drogue descent rate nominal. दो पैराशूट, एक भी नहीं, दो। On 200. अब ये
अब ये पैराशूट से चांद पे लैंड करने वाले हैं। नहीं नहीं चांद पे नहीं, ये जमीन पे वापसी आ As रहे हैं। Dragon जमीन Freedom पे continues अच्छा, to ये make वापस its आ रहे way हैं। हाँ जी, back to planet हाँ ये Earth. फंस गए थे, 9 महीने फंसे रहे हैं ये ला के अंदर। हाँ Next up, we'll stand by for the main deployment of the parachutes. The mains are quite a bit larger. You'll be able to notice the difference on your screen once they deploy, and they continue to ensure that the Dragon spacecraft slows down even further. As we mentioned, Freedom will be traveling 16 miles per hour when it splashes down off the coast of Tallahassee, Florida, here at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. And there we go. We have visual वो on 4 healthy 2 और mains. खुल गए, 4 हो गए। That view was from inside. Freedom Very good. copy. And That view was from inside one of the buckets where the parachutes are located. So we see a great view there of वो the कैसे reefing खुल गए। on those parachutes. And as those Nice. those main parachutes begin to inflate fully, ये समंदर में लैंड 4 करेंगे देखना, beautiful, healthy mains. हाँ क्योंकि ये सारे कैप्सूल जो है ना समंदर में जाके लैंड Now करते हैं। awaiting visuals of Splashdown. Next Freedom 1000. We'll start to hear Commander Nick Hague. Copy 1000. As we heard right there, Commander Nick Hague will be calling out the altitude of the Dragon capsule from here on out. Landing in water is simpler and provides more margin against unlikely parachute issues. You can see those parachutes continuing to slow the Dragon capsule down. And if you're just joining us, you're looking at 800 meters. a live Hey. view of Crew 9, just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida. Splashdown वो 2 इतना minutes छोटा from now क्यों at लग रहा है? 2:57 p.m. Pacific. We है do वो have बड़ा 4 healthy mains really doing the वो job देखो there. Just breathtaking views of a इसमें कितने calm, लोग हैं? glass-like ocean off the coast of Tallahassee, Okay. Florida. Crew 9 just minutes away from splashing down. This is really such an incredible shot. That Copy was 600. ये देखो 1 2 3 4 that was a live स्माइल view स्माइल आ from रही है a उनके recovery फेस पे। vessel. Megan, which is stationed a couple miles away from the splashdown site. We can see the crew Hopefully they there will land using safely. their restraints as resting places for their arms. They were just in space moments ago, so their arms were able to float freely. 100. 400 meters. This is a gorgeous bluebird day here that we have for the splashdown of Crew 9. It's incredible to think that the Dragon capsule just minutes ago was going over 17,000 miles per hour, and now gently coasting to a soft splashdown. 200. Copy 200 meters. Brace for splashdown. सिर्फ 200 मीटर है क्या? As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon थोड़ा फिल्मी सीन नहीं spacecraft. लग रहा? है ना? And we're going to stand by Filmy for scene लग रहा है ना? splashdown, located in the Gulf of America, off the coast of Tallahassee, Florida. तो नीचे बोट कहाँ है? अभी जाएंगे ये जब लैंड Oh. करेगा। And ये लैंड किया। splashdown. Crew 9 back on Earth. ये देखो ये वाह And SpaceX Freedom splashdown. Oh. Good main release. Copy splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. It is an amazing, what a ride. I see. देखो कैप्सूल भी डूबता नहीं है पानी के अंदर। Ear to ear. हाँ वही ना मैं देख रही हूँ डूब नहीं रहा इन्होंने इसको मैन्युफैक्चर ऐसा किया हुआ है ना? And as you can see on मुझे your वो मूवी screen, we लग रही है have visual confirmation of splashdown. Dragon Freedom has returned home, and NASA astronauts. System safety verifications are in progress. We'll report back when recovery personnel are en route.
we're in section 2, 4.800. मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि इसमें से अभी बाहर कैसे निकलेंगे। अभी दिखा देंगे वो भी। Looking for your word. मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये इसीलिए गेट अभी ऐसे है ऊपर। Crew 9, welcome back to our मुझे Crew भी यही 9. लग रहा था। When we saw the Dragon capsule docked at बोट्स station, भी it आ looked रही very हैं, ये खुद different. ही भी आ खुद गया भी है। जाएगी, The इसका सब panel ये खुद that जाएगी। protects and covers वो बोट the आ main रही है। parachutes, that was बोट्स still आ रही हैं, intact, वो as 3 well बोट्स as आ the रही हैं। वो panels आ गई, that वो आ गई, enclose बहुत आ गई। where the drogue Yes. parachutes are located. We can see those fast Freedom, boats. SpaceX is go for recovery personnel to approach. Expect personnel alongside in the next few minutes. Freedom copies. We can see those fast boats. We weren't kidding when we said they were fast. While it does take about 30 minutes for the main recovery vessel to make its way over to the capsule, these fast boats will be doing a couple of things simultaneously. A couple of them are going to be working to retrieve the parachutes that you see in the background there of this drone shot. Those parachutes will be retrieved from the ocean surface. We want to make sure we are able to pull those out. The recovery vessel there closest to the spacecraft is going to be performing some safety checks. We can see there they're using an instrument that is basically working to detect if there are any hypergolic vapors or fumes that are still residing in and or around the Draco thruster nozzles or outlets. Now here on your screen we can see dolphins actually who want to come and play with Dragon. Now one of the fast boats there in place working to वो assist the मछलियां भी नजर आ recovery रही हैं team वो साइड member. में। It's incredible. हाँ, I just love फोटो these नजर आ views. रही है। We वो really शार्क see them नजर आ even रही better है। in daytime, but just seeing the recovery team ये work in डॉल्फिन है। tandem to step through each step, or excuse me, to step through each operation. Obviously they're getting quick assists from the honorary part of the recovery team, those dolphins in the water there. Dolphins Wow, in the we got water, a cute little dolphins. pod of dolphins. It wasn't just one or बिल्कुल two. डॉल्फिन। अरे अब उनको निकालो भी। ये रहा, रिकवर कर रहे हैं। वो भी नहीं निकालेंगे, पूरा सेफ्टी There it वो होता goes, है Dragon उनका। Freedom being हाँ, lifted out of the water and onto मेरे our को ना वो recovery घड़ी में vessel रिपोर्ट भी आ गई Megan. ना। ये देखो। इस पे प्लेन को लैंड करवाएंगे। हम्म। तो देखो सब ने मुंह ढके हुए हैं सारा कुछ, क्योंकि उसमें जो है ना वो बहुत सारे हो सकते हैं इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस, केमिकल्स हो बैक्टीरिया, सकते हैं ऐसे के जो केमिकल्स, हाँ। सब कवर्ड है। So once securely on, Welcome aboard the recovery vessel. Recovery personnel are completing final checks and stand by for translation to the egress platform. Freedom copies. Now, opening that side hatch isn't quite like opening, the door to your car. ओपन होने We have लगा to है, डोर depress ओपन the होने लगा। seal around the side hatch, as well as, we'll now see them open that side hatch up. वो किस तरीके से बंद है देखो। and there you have it. The side hatch is open for the first time since September. We can see some of the protective equipment there that was brought into frame that will help protect the edge of the side hatch. And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. चलो अब आ जाओ बाहर। बाहर आओ अभी इनका उनके। फोटो शूट हो रहा है। We can see folks on करो, बच board गए हो। clapping as our first crew ये member. चला निकला। ओए And that is NASA उससे तो astronaut खड़ा भी Nick नहीं बजा Hague, रहा। commander of Crew 9, now out of Crew Dragon Freedom.
Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah, that is one happy camper, that's for sure. Next up, out of the capsule, we expect Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. His first साहब space लगाओ, उनसे flight. खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है Spent 171 days in space खड़ा भी नहीं हुआ जा alongside रहा NASA astronaut Nick Hague. 71 डेज के बाद वो Looks like we're लौटे हैं getting वापस। some cheers and clapping on board वैसे वो वहाँ पे उसकी ज्यादा बैटरी as नहीं है ना Alexander is slid down the little ramp 71 and डेज, placed 2.5 into महीने the यार, ये mobility खर्चा होता है। aid. Once again, big smile. ये For those of you that have just recently joined, the Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. ये ये फीमेल है Smile, female है big waves. ये लेडी है She, like her other crew इसकी members क्लिप भी वायरल हो रही है now, काफी will be आजकल। assisted onto the mobility aid. देर इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है उनसे हाँ And there we have it. Some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems to be a theme among all recovery operations. Absolutely. And of course, that leaves NASA astronaut Butch Wilmore inside Dragon in seat 4. We're getting some views of him now as he egresses or exits the spacecraft. ओ Once again, some ये elation and cheers there from Butch Wilmore. As we mentioned before, returning to Earth from coming from a microgravity environment can wreak havoc on the body. So it is customary and just standard procedure for all of our long-term space residents to get assistance once they are back on board the recovery vessel. वाह भाई वाह क्या बात है यार। वाह जी वाह क्या बात है वेल डन यार इतना एडवेंचर बहुत ज्यादा यार साहब लगाओ खला में 9 महीने बता के आए हैं वो भी सिर्फ इनका टूर जो है ना तकरीबन कोई 10 दिन का था और 71 डेज नहीं 71 डेज इनको मेरा ख्याल इसमें हो गए हैं बैठे हुए 9 महीने से ये फंसा हुआ ट्रैवल कर रहे थे उसमें 71 डेज हो गए। वैसे इनको 9 मंथ हो गए हैं खला के अंदर माय गॉड सिर्फ 10 दिन का ये टूर था टेक्निकल खराबी की वजह से और ये देखो कितनी हिम्मत का मुजाहरा किया है चारों ने किस तरीके से सरवाइव किया है ये तो इन्हीं के ऊपर जो है ना ये सारा वहां पे भाई कोई चीज ही नहीं है मेरे दिमाग में अगर ज़हन में आ रहा है सिर्फ मेरे दिमाग में आ रहा है मौत भाई गुड लक है ये बहुत लकी हैं जो वहां से सरवाइव करके वापसी आए हैं बाकी जारी बात है पीछे वालों ने भी सपोर्ट की है इनके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने फराहमी की होगी क्योंकि वहाँ पे स्पेस स्टेशन है खला के अंदर तो हो सकता है वहाँ से लिंक किया हो कुछ किया हो इनको फूड वगैरह प्रोवाइड किया हो वो तो डिटेल जो है ना और जब इसकी मजीद खुलेंगी तो और डिटेल आएंगी उसके ऊपर भी हम रिएक्शन करेंगे लेकिन ये एडवेंचर देख के जो है ना बड़ा मजा आया बाकी अपने टीम के रिव्यू लेते हैं जी किरण ऐसा एडवेंचर मैंने तो सिर्फ मूवीज में देखा है ये रियल में देख के ना ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत ही एडवेंचरस और थ्रिलर मूवी देख रही हूँ और इन चारों के लिए तो क्लैप है ये लेजेंड सर्वाइवर है इन्होंने बहुत सरवाइव किया है और इनको जब वो बाहर नहीं अभी निकाल रहे थे वो देख के ऐसे हो रहा था जैसे पता नहीं दिल को कुछ हो रहा है यार इनको जल्दी निकालो कितना टाइम वो ट्रेवल करते रहे हैं खला में और ये टेक्निकली खराबी ऐसे वैसे होनी नहीं चाहिए आप अगर इतना किसी को खला में ये बहुत ही एक रिस्की चीजें होती हैं इन सारी चीजों को जब तक परफेक्ट नहीं होना चाहिए नहीं भेजना चाहिए उन लोगों की जान को खतरे में डाल के वो लोग अगर सेफली उन्होंने लैंड किया है तो ये बहुत ही खुशी की बात है और अच्छा लगा उनको देख के लेकिन जितना इसमें एडवेंचर दिखा दिया ना उफ
बाकी ये है कि वो प्रॉपर अपनी तरफ से तो पूरा करके ही जो है ना वो भेजते हैं, लेकिन टेक्निकल अब वहाँ पे कोई खराबी आ जाए तो कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारे केसेस बहुत सारी, मुझे बड़ा शौक है ना साइंस की, इस तरह की वीडियो देखने का, ओके। इंफॉर्मेशन लेने का, तो मैं देखता रहता हूँ। बहुत सारे कैप्सूल जमीन पे आते हुए फट भी जाते हैं, कितनों की इस तरीके से डेथ भी हो चुकी सच है। में? हाँ जी, पड़ जाते हैं। कितनों की डेथ भी हो चुकी है सिर्फ टेक्निकल इशू की वजह से। कई कई तो ऐसे हुए अभी लॉन्च हुआ है और जाते हुए फट गए। तो ये तो बहुत बिल्कुल। खुशकिस्मत है जो 9 महीने सरवाइव करने के बाद वापसी आए हैं। जी शफक। ये क्या ही बात है यार, ये असल में ना देखा जाए ना तो ये असल में हीरो है। ठीक है, जो खला में जाते हैं और फिर वहां पर मतलब कि वहां पर ना कोई दुनिया है ना कुछ है, और ये वहां पर रहते हैं और सारी मतलब साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू पे जो भी वहां पर ये काम करते हैं या जो भी ये देखते हैं, ये इन लोगों को सलूट है भाई हम लोगों की तरफ से। और फिर टेक्निकल इश्यूज जो है वो हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर है अपनी तरफ से तो ये बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई समटाइम इशू आ जाता है। और बड़ी बात है कि 10 दिन के लिए ये लोग गए हैं और इन्होंने वहां पर 9 महीने गुजारे हैं, और 9 महीनों के बाद ये वापिस आए हैं और माशाल्लाह से ये सलामत आए हैं, जिंदा आए हैं। ये बड़ी बात है। वरना तो बाकी वो आपकी बड़ी बात है कि समटाइम तो वो फट जाते हैं, जाते टाइम ही आते टाइम ही वापसी पे ना हो जाता है। तो वेल डन यार, आप लोग तो कमाल हो, कमाल का आपने वहां पे एफर्ट किया है। जी राजा जी। जी काफी मतलब कि मैं तो ये फीड में मेरे ये कल से मतलब कि काफी वायरल थी ये वीडियोस, और मैं देख देख के मैंने कहा ये पता नहीं क्या है। फिर मैंने थोड़ी सर्च की तो पता चला कि ये नासा के जो आए हैं अपने स्पेस के जो बंदे हैं वो वापस आए हैं। तो जिस तरह आपने बोला कि टेक्निकल फॉल्ट होता है, तो जिस तरह आपको याद हो के पीछे जो एक एपिसोड टाइटैनिक को देखने गया था, हम्म। और वो वहीं पे मतलब कि 2 दिन बाद पता चला कि वो बिल्कुल डेड हो गए सारे। तो जी अब बिल्कुल। ये तो टेक्निकल फॉल्ट तो बिल्कुल आ जाते हैं, वो तो है। लेकिन काफी मतलब कि एक तो जमाना था कि जब हम लोग सोचते होते थे कि चांद पे जा सकता है या कोई भी इस दुनिया से कोई बाहर जा सकता, दुनिया से कोई बाहर चीज कोई है या नहीं। लेकिन अब देखो तो बाहर की पिक्चर्स आ रही है सारा कुछ, अब तो स्टेशन बन गए, स्पेस स्टेशन सब कुछ। तो काफी मतलब कि इससे भी एडवांस लेवल में जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी कोई ऐसा मतलब कि हो, कोई थोड़ा सा मतलब कि एक वे ऑफ नेशन बने कि लोग मतलब कि इसकी तरफ जाएं थोड़ा सा। जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सोचे कि, क्योंकि अब सारे इसकी तरफ जा रहे हैं साइंस की तरफ, सारे थोड़ा देख रहे हैं कि हमारी भी एक स्पेस का हो। हमारा जो हमसाया मुल्क है उसने भी मतलब कि पिछले कुछ साल स्पेस में अपना एक छोड़ा था उन्होंने अपना रॉकेट। तो अब हमें भी चाहिए कि हम भी साथ साथ दुनिया के रहें, ना कि उस रेस से पीछे हों। तो बेस्ट ऑफ लक इन सब चारों को। और काफी मतलब कि इंफॉर्मेशन मतलब के पता चली है कि किस तरह आता है सब कुछ, तो काफी इन्फॉर्मेटिव है। गाइस इसकी फर्दर डिटेल कोई आएगी तो हम जो है ना उसके ऊपर फिर दोबारा से वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी डिटेल बताई जाए। मुझे लग रहा है ध्रुव राठी की बहुत जल्द हो सकता है, जहाँ से मुझे जैसे मैं उसको देखता हूँ ध्रुव राठी को, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाएगा। अब जो है ना देखने का और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अपनी पूरी देता है। बाकी ये था रिव्यू रिएक्शन, कैसा लगा है फीडबैक जो है ना कमेंट में दे देना। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।